Hello student, I am going to discuss a very common problem uh, which is generally asked by the student who are preparing for NEET and JEE. Okay, they have like issue related solving this problem, like where there are multiple blocks and the friction force is involved. Okay, now in this situation, one more important thing is like to understand the limiting friction. Okay, because friction force is self adjustable. तो स्टूडेंट जनरली क्या करते हैं वो फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू हमेशा काउंट कर लेते हैं, जो कि सही नहीं है. फ्रिक्शन फोर्स इज अ सेल्फ एडजस्टेबल. लेट अस सी हाउ we have to apply the concept of friction in this question. So find the acceleration a1, a2, a3 of the three blocks shown in the figure if a horizontal force of 10 Newton is applied on a 2 kg block. So in this question there are three parts. We will try to solve the first part. The most important thing of this problem is the free body diagram, FBD, the free body diagram. Okay. So let us see how to draw the free body diagram to solve this problem. Here mu1 equal to 0.2 is the coefficient of static friction between this block 2 kg and 3 kg, and mu2 0.3 is the coefficient of static friction between 3 kg and the 7 kg, and between 7 kg and the ground there is no friction because mu3 is 0. Okay, now we are going to apply the force on the 2 kg block. So this is your 2 kg block and you are going to apply 10 Newton force. Okay, so what are the forces are going to act other than this 10 Newton? तो यहाँ पे क्या होगा कि एक नॉर्मल फोर्स लगेगा and 2g will act downward, that is 20 Newton, right? So the value of normal force will be also the normal force. Let us take it as a n1. So the value of n1 is also 20 Newton. And how much is the maximum friction force? Maximum friction force on this 2 kg object. This is your 2 kg object, right? The maximum friction force is how much? That is mu1 into n1, right? And that is how much? 0.2 into 20. That is 4 Newton. And 10 Newton acting in forward direction. So how much is the net force? The net force on this 2 kg is how much? 10 minus 4. This 10 minus 4 is equal to 2 into a, and its acceleration is a1. Its acceleration is a1. In the question itself, they are telling a1, a2, a3, means a1 is the acceleration of 2 kg block, and a2 is the acceleration of 3 kg block, and a3 is the acceleration of 7 kgs respectively, right? So this 6 is equal to 2 into a1. So the value of a1 is 3 meter per second square. Okay. Now this is the acceleration of the 2 kg block. Now here is a question. This 2 kg block is going to move together with the 3 kg or 7 kg or not? Means the acceleration of a1, a2 is same or not? That we have to check. So for that, we have to draw the free body diagram of the 3 kg object. Let us draw the FBD of 3 kg object. How we will do it? Okay, like we have to use the space carefully, right? So here, like I'm going to draw the 3 kg, right? On 3 kg, what are the forces will act? See, the friction force on the 2 kg block is acting backward, and it is acted by the 3 kg block.
So on 3 kg block, the friction force will act in the forward direction, and its value will be also 4 Newton, right? And how much is the maximum friction force? The maximum friction force यहाँ पे कितना होने वाला है? तो let's say the normal reaction is N2 and 2 kg is also acting a N1 force in downward direction, and its own weight, that is how much? 3g. So if we simplify, then the value of N2 is going to be N1 plus 3g. So this supposed to come how much? The value of N1 already we have, that is 20, and plus this is 30, so 50 Newton, right? So what is the value of maximum friction force? Let's say it was 1 and this is, take it as a 2. So the value of maximum friction force is here how much? That is mu 2 into N2. So this is supposed to be how much? 0.3 into 50. So this is coming 50 Newton. अब now यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स 50 न्यूटन आ रहा है, तो क्या हम 50 न्यूटन ले लेंगे क्या? यहाँ पे स्टूडेंट जनरली मिस्टेक करता है, वो ब्लाइंडली 50 न्यूटन ले लेता है, वो भूल जाता है कि द फ्रिक्शन फोर्स इज सेल्फ एडजस्टेबल, फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टेबल है, वो ये 50 न्यूटन ब्लाइंडली ले लेता है। यहाँ पे जब ये जो 3 kg ऑब्जेक्ट है, इस पे 4 न्यूटन आगे की ओर लग रहा है, ठीक है, मैक्सिमम फोर्स कितना लग रहा है? 4 न्यूटन, एंड द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन 3 kg एंड 7 kg इज हाउ मच? 50 न्यूटन। देन व्हाट विल हैपन? एंड देयर इज नो फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन 7 एंड ग्राउंड, so this 3 kg block will move together with the 3 kg and the 7 kg block move together, and the net force will be how much? 4 Newton in forward direction, right? So here this will act as a net force in the right direction, so 4 equal to net force equal to mass, net force हो गया हमारा, net force is equal to 4 into 10, 3 plus 7 both are moving together, 3 plus 7 into क्या हो जाएगा? A2. So this 4 equal to 10 into A2, A2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों साथ में मूव कर रहा है 3 और 7 kg, तो यहाँ पे जो A2 और A3 बोथ आर सेम, तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ओके, नाउ द बी पार्ट बोल रहा है कि अगर हम, द बी पार्ट इज टेलिंग कि इफ, अगर जो हम फ्रिक्शन ये 10 न्यूटन को 3 kg पे लगाते हैं तब क्या होने वाला है। द बी पार्ट इज टेलिंग अगर हम 10 न्यूटन को इस वाले पे लगाएंगे तो क्या होगा। ये 2 kg है और नीचे हमारा कितना है? 3 kg है, और उसके नीचे क्या है हमारा? 7 kg है, राइट। एंड वी आर गोइंग टू अप्लाई द 10 न्यूटन फोर्स हियर, राइट। देन क्या होगा हमारा? अभी हम देख चुके हैं कि 3 kg और 7 kg के बीच मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना है? 50 न्यूटन है, और हम 10 न्यूटन ही अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा? 3 और 4 kg तो साथ में मूव करेगा, इसकी तो गारंटी है। इनको अलग करने के लिए 50 न्यूटन से ज्यादा फोर्स की जरूरत होगी, जो कि है नहीं, 10 न्यूटन है, तो ये तो गारंटी है कि 3 न्यूटन और 7 न्यूटन साथ में मूव करेगा। अगर जो 3 न्यूटन और 7 न्यूटन 3 kg और 7 kg साथ में मूव करता है तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी? नेट फोर्स, अगर जो मान लो कि यहाँ पे ये स्लिप भी कर रहा है, 2 kg मान लो मूव नहीं करना चाह रहा है, लेकिन 2 kg और 3 kg के बीच में मैक्सिमम फोर्स कितना हो सकता है? 4 न्यूटन का यहाँ पे निकाल चुके हैं हम लोग, देखो यहाँ पे 4 न्यूटन निकाल चुका है हमने यहाँ पे, राइट।
ये 2 kg और 3 kg के बीच में कितना फोर्स है, 4 न्यूटन, और मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू है। तो 3 और 7 का जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है इस फोर्स के कारण, वो हो सकता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, F इक्वल टू एम से, राइट। तो बड़े वाले ब्लॉक में तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या है, 4 न्यूटन है। तो ये मिनिमम जो इसका एक्सेलरेशन हो सकता है कितना हो सकता है, वो ए का मिनिमम जो एक्सेलरेशन हो सकता है फ्रिक्शन फोर्स के कारण, जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो हो सकता है वो 4/2 हो सकता है, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जबकि 3 kg मूव कितना से कर रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो इसका मतलब है कि ये तीनों ब्लॉक साथ में मूव करेगा। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कि ये तीनों ब्लॉक साथ में मूव करेगा। नीचे ग्राउंड में हमारा कोई फ्रिक्शन फोर्स है नहीं, क्योंकि ये स्मूथ सरफेस है। क्यों, μ3 दिया हुआ है, μ3 दिया हुआ है कितना, 0। तो नो फ्रिक्शन फोर्स है। सो व्हेन यू आर एक्टिंग 10 न्यूटन, देन द टोटल मास यू हैव टू काउंट। The total mass will come how much, 12 into A, where A is the common acceleration for all three. So the value of A will become 10/12, right? That is कितना हो जाएगा, 5/6 meter per second square. So if you act the force on the middle one, this 3 kg block, then all three block will move with the same acceleration, that is A1 equal to A2 equal to A3, and that will be 5/6 meter per second square. The same thing happened for the C part also. If for the C part, if we apply a force on the 7 kg 10 Newton, then all the three will be moving with the same velocity, same acceleration, that is 5/6 meter per second square. Okay. So what are the important thing regarding this kind of question is that understanding the concept of friction and understanding it is the limiting it is self-adjustable force, and second is the FBD, free body diagram. The student generally they do not try to draw the free body diagram, so they do not understand the concept. Okay, I hope it is clear for you.